the most common type of letter, referral letter or discharge letter or transfer letter or request letter. These are the most common types of letter. At time we can have the letter of update, but the letter of date is you can say another name of the letter of discharge. Mostly when we are referring back to the like say general practitioner, so we are updating general practitioner the procedure that we had done, right? You can also have a letter of request, letter of education, or letter of information as well. So there are three different categories of letter that we have measured in our writing. The important thing is to understand the different type of the marking criteria, the purpose, selection, organization, conciseness, genre, and language. So, generally speaking, we do have a letter of referral. As you can see there, we have the letter of referral as well. So, mostly, we can go to the bottommost part in the letter of referral over here. You need to read the writing task, whom we are writing, and then the main concern. Accordingly, you will select the case notes of like that, the thing that are appropriate, relevant, semi-relevant information, right? And then you write the letter. So this is a general format of writing the address. Date can be written over here and over here as well. The point of order specifically with reference to the tomorrow, with reference to the tomorrow exam, we can see there that there might be the date that would be written over here in the exam. Normally, from the last, let's say, I think 7 to 8 exam, they do mention assumption date, like assume today's date to be. For example, you have exam on 2nd of September. So previously, what we used to have, they do mention that today's date as 2nd of September. But now what they are doing, like say they will write down, assume today's date to be 3rd March 2023. So here you can write down 3rd March 2023 or maybe here, whatever format you're following. Then we can write down the recipient name if the name is given. If the name is not given, then we can directly start with the designation. We can write down the or without the. It's totally fine. Both of the format are acceptable. The name and hospital address can be written in this way. The first letter capital. And we have to break the line whenever you find a comma over here. Anyhow, then you can see regarding part, patient name, then date of birth, age, whatever is given, right? Then we can see there, we can write it down. Let's say, dear doctor, his second name. Thank you for seeing Mr. Colister. So yesterday, one of the students had asked me a question that she had read somewhere that we should write down the first name, like the full name over here. So basically, it's fine. As per the language rule, if you have mentioned the name of the patient in the regarding part, you have to mention the second name again. But there are some samples, the model answer of the OET, they are following at time the full name, they're following at time second name is totally fine. So whatever format you are following is a minor thing. So you can just write down clearly the reason of writing. Whatever the reason of writing is, it has to be very clear in your introduction part. It has to be very clear. You should not miss the main part. Second question that student would ask, or they have a question concern, at time maybe, let's say, they have mentioned the further assessment and management. So it's totally fine to write it down over here. Let's say, thank you for seeing, or I'm ready to refer Mr. XYZ, whose sign and symptom are suggestive of diabetes mellitus for further management. So I can write it down, further management over here. Sometime we have investigation being given. Let's say if there is instruction of HbA1c, we can write it down over here. I would appreciate if you could, let's say, run the HbA1c test, let's say. But at time it's preferred to write it down in conclusion. So both of the format are fine. Whatever format you're following, it's not that you can change at the last moment. So you can write it down the investigation specifically in the last part that is being requested for the confirmation of the diagnosis in referral letter. It can be written over here or over here as well, right? But you can see that both of the format are fine. You can write it down over here as well or in the last part of the letter as well, right? Anyhow, so you can see, then we can write it down. Okay, the second more important question that we can have over here is to write social history or family history. Remember that there is no hard and fast rule. Remember that there is no template, there is no standard structure or whatever you can say. It should be written as per importance. Let's say as per importance. If we have the weight, let's say it's important in this case, so I'm writing over here. Whatever is important, we can write it down over here. Social plus past medical history can be written over here. Then you can see in the last letter,
when we were selecting, this is all the irrelevant details. So we have omitted all the details from here. And you can see that we have started from second last visit. Anyhow, then the today visit and then the conclusion paragraph. Again, we have mentioned about the diabetes mellitus and further assessment has been written. And this is sign of statement. So the point to ponder is, as long as you are focused in your writing, as long as you have not, mask the main issue. So it's totally fine whatever structure you're following. But normally we can have chronic to acute pattern or acute to chronic pattern, or we can say that simply in simple word, either it's a chronic pattern, like the way the disease is progressing. Let's say we can write the letter in that way, or it's a theme based. No, most of the students you may have heard, okay, referral letter may, if we have the urgent referral letter, we have to start from today visit no matter what. It's not the case, though we preferred, but still I would say that it's not the case that no matter what you have to start from today's visit, right? We have to make sure, first of all, that we should not mask the issue, number one. Number second thing is that we make sure that we should not lose the coherence or clarity, because at time when we are starting the letter from today visit, we might lose the clarity in our writing task. So it's not hard and fast rule. We can write it down later in urgent referral letter theme based. For example, whatever the letter suggests you to start with. At time in urgent referral letter, there might be something that is quite important in the past visit that we cannot ignore. So we can start from that point. Anyhow, so but I would not say that you have to write in this way or that way, but I would suggest you to have a clear focus in your writing. You would read your case tomorrow, and you need to understand that why this letter is being written. And according to that letter, you have to make sure that this letter should have a clear focus, whatever letter you are writing. So let's say this is another letter. Previous letter was simple referral. Now this is the urgent referral or transfer category. You can see that this selection has been done. This is John L1 case. So there was a chest pain from the first visits, and now this is a severe chest pain. So it's a progression of the event, and we are suspecting AMI. Let's say we are suspecting APO, so differential and urgent referral letter. So basically, this letter template has been written in different way. It's not the case that you should follow this template, but just to make you understand that there are a lot of ways to write down this letter. You can see there. So thank you for seeing Mr. Alvin, whose sign and symptom investigation are suggestive of, let's say, blah and blah. Okay, that we have written the differential AMI. It should be written in full form, preferred. Acute pulmonary edema should be written full form, preferred, along with worsening of asthma. So there was no further guideline that we have mentioned. That guideline was mentioned over here. So you can write it down over here as well for definitive diagnosis. It's fine. Now you can see, though we have started from the recent history, on today's consultation, Mr. Alvin reported, but in the same paragraph, you can see that we have clubbed the past history to make it more clear. Why? Because you can see that the letter can be categorized into two components, the cardiac history and the pulmonary history. So we have differentiated cardiac history separately and the pulmonary history separately. So you can see this is the recent event and this is your past history. So we have covered in one line. Then we can see that the patient has worsening of asthma. It has been covered in one line, and he was not compliant. And today's presentations examination, we have written in this way. So then we have a socioeconomic history, a packed cigarette smoker separately. So you can see that this letter has been written in this way, that they should have a clarity in the letter. And you can simply see that every paragraph nominates to a different thing. So it might not be a mixture of the things, right? However, this letter can be written in different format. I would not suggest you to just follow this format. This letter can be written in different format. Let's say we can start from, maybe we can add some of the information such as packed cigarette smoker, such as significant stress or a negative family history. In one line, let's say Mr. Alvin, a packed cigarette smoker, drinker with significant business stress, however, has negative family history, presented today with. So in one line, you can write it down. You can club the information. It's totally fine. We can simply start from chronic history of chest pain. Mr. XYZ, who has had visited us multiple times over a period of 3 weeks with mild exertional chest pain apart from ischemic heart disease. There was nothing significant detected. However, he presented with worsening of chest pain. So in one line, it can be written. So you can see that it will not make a major difference because within a one line, you are telling about the important symptoms. Anyhow, but I would close this thing in one word, that you should have a clear focus, whatever format you are writing. You should not make sure, you should not, we can say, mask the most recent history, because in every letter, the most recent history is, the recent history is the most important thing, right?
Now you can see that we have a letter of discharge. Mostly, it has been seen that the letter of discharge, we have a discharge plan. That is the most important thing. We have a discharge plan. That is the most important thing. And we have to follow that discharge plan basically in here, right? We have to follow the discharge plan in here. So if you can see that, we have to see, like if discharge plan is important or not, right? So you have to, expand the discharge plan, and you have to summarize the, you can say the ward history and the rehab. Okay. Okay. So basically, we can see that we have the ward stay, and we have the rehabilitation, and we have the discharge plan. So basically, your ward stay should be summarized, your rehabilitation should has also be summarized, and then discharge plan has to be expanded. So generally speaking, this is, you can see, if you can focus on this letter, this is letter of discharge being written to the local doctor. They have used the word update, but in simple word, it's your letter of discharge. In simple word, it's your letter of discharge, right? Anyhow, so we can see that now we are writing this letter, we are selecting. In a letter of discharge, if you are writing a letter back to the primary care physician, so past history will be mostly irrelevant. Still, you have to see there's a possibility that they might have something that might not be known to the primary care physician, specifically if it was a self-referral, like the patient was not referred by the GP, but it was a self-admission, sorry. So in that case, there might be something that could be important to be in, let's say, mentioned in the letter for the GP. So you have to see the letter. You need to understand the case, have a clear picture, then start writing. So read this last part first, see the discharge plan, and then see the case note from top to bottom, right? Okay. Okay. Anyhow, so basically, you can see that this is a selection that we have done over here. So then we can see this is a format of writing a letter. Writing to update you regarding Miss XYZ who has undergone a successful replacement surgery. So at least it's clear that we have a successful surgery, and we can also mention for further follow-up over here as well. Then this is a summary of your rehab plan. You can see, as in the case, this was your ward stay, and this was your rehabilitation stay. What we have done, you summarize in just few lines. So Mr. Johnson ward, and we have focused on the patient mobility. That was the main idea for the ward and rehab. Her stay remained uneventful apart from one thing that was important, for which what you have done, and then rehabilitation program, what we have in the rehabilitation program. So you can see that we tried our level best that we should not miss something important. We have incorporated all these important things that would be important for the GP to know what had happened in the ward. Anyhow, then we can add a discharge plan. So you can see this is important than the ward and rehab. So we have expanded the case notes, right? So Mr. Johnson wound is exposed and there is no cardiac issue, whatever. We have expanded the discharge plan. So basically, we like to discuss few other types of letter as well. We can have a letter then we are writing from GP to GP, like when you are primary care physician and patient old GP, and now you're writing to a new GP. In that case, all the information will be relevant. We are not supposed to miss anything. However, we have to keep focus. You should see the sequence of the case notes might not be the right sequence. You have to see the focus, right? Yeah, in this case, this is a known case, patient already known to the GP. So we have to see, mostly, we have to keep in one thing in mind. If you're writing this letter to a primary care physician, it's a GP to GP referral. Then in that case, you have to make sure that you should not miss anything important, right? So, but have a clarity in your writing task. One more thing that I would like to add over here, specifically discharge letter by concept is almost the same, like social plus past medical history is not that much important if it's a conventional discharge between the same profession. However, in the nursing discharge, we do write it down social plus past medical history, but not in priority in a conventional discharge. But rest of the information remain the same, that you have to summarize the admitting details or the ward stay, and we have to expand the discharge plan, right? The referral concept is same for everyone because we have to keep like the focus in mind, and we have to ensure that selection of the case notes and organization has to be done with reference to a clear focus, right? So
Then we have a GP to GP transfer, as we discussed, for the medicine candidate, and nursing home to nursing home transfer for the nursing candidate, because it's almost remain the same when you are a nurse of nursing home and you're transferring the patient to a new nursing home. So by concept, it's the same as we discussed the GP to GP transfer from one place to other place. The reason could be relocation. The reason could be the request of the family that the patient is relocating to one place to another place. We have also have the transfer letter. Now, transfer letter have a category, first of all, from low to higher hierarchy. Number one, transfer letter could be, it's a permanent transfer. Permanent transfer mean to transfer to a palliative care. There is no coming back. It's also a permanent transfer. Transfer could be one-way transfer. They can use this word to confuse you, but one-way transfer means that there is no coming back again. Like it means that one-way transfer, such as to the palliative care, such as to the elderly home care, for example. This is your one-way transfer. And then they can use the word like two-way transfer. Two-way transfer means there's a coming back. So, for example, to the let's say to any facility, maybe for the current when you quarantine the patient and he has to come back. So these are the two-way transfer. Normally in the transfer we have a transport being involved, right? So, secondly, the letter of request. In the letter of request, it's mostly being written to the person not from your profession, either in the medicine or nursing. So we have different professions such as occupational therapist, such as physiotherapist, such as social worker, such as let's say to a pension care for a genetic review. So whatever type of letter you can have, maybe. So you have to make sure that you must understand the nature or the job of that person, whatever that person do, according to his job nature and according to the guideline that has been given to you in the letter that this task has to be done. You have to go for the selection. For example, if you're writing to a pension care because the patient is having some financial issues, so even if it's a letter of discharge, even his wound is not exposed and even his wound is not improving, let's say that wound need dressing. But if you're writing to a pension care, so this wound thing and this discharge plan might not be that much important to be written. We can write it down social plus past medical history, because now in medicine, you are not writing to the GP. You are writing to a person who don't know the patient, right? Then similarly for the nursing care, this format remain the same. We do include the social plus past medical history with reference to the financial point of perspective. Even let's say if the patient is not having any car, it can relate it to the patient financial status. Even the patient is unable to manage any financial, like say the grocery and all these things, can be written in priority over here. Then you have to request for the financial aid and so on. So according to the requirement. Similarly, for occupational therapist, his job is to do the hazard assessment at patient workplace or maybe at home. Similarly, to a physiotherapist, similarly to a social worker. So first of all, you need to know what is the job of that social worker or physiotherapist and what is the appropriate guideline that has been given to you in the writing task. So accordingly, you have to design a letter. So whatever type of letter you can have tomorrow, you have to see that it must have a clear focus, right? So then we can see that these are the few types of letter we have discussed. We can have education letter as well. We can have information letter, but less likely that you may experience such letter in medicine or nursing, right? Anyhow, so any question that you want to ask for now in this letter writing task? Any question that you want to ask? 20 minutes in total. Warm-up session, they can ask you some general question about your, like profession, hobbies, and so on. There will be two profession-specific role-play card. 2 to 3 minutes time is being given to you. You can take the notes. This card will remain with you, and then you'll be given 5 to 6 minutes time for counseling, and same the card will remain with you, right? So basically, apart from the registration process, right, like you can see that the component of the card we have setting, we have history and the task. So the marking criteria you should be having in your mind. The first one is the clinical communication skills, where we have how to start a card. We need to be attentive. You must have a non-judgmental approach. You have to show the empathy. You must explore the patient perspective, specifically when you are in the conflict with the patient. And whenever you have a conflict, step back and explore the patient concern and maintain your tone. You can pick up the patient cue. Cue mean that you can see something from your naked eye. Let's say if there's some sign marks, let's say the patient is not walking properly. This is called as picking up patient cue. Design your consultation with reference to patient response. Like it's not the case that you have to follow the task of the card. You have to see if the patient is switching from one point to point number 3 and he's skipping point number 2. So still you have to go for the point number 3 first,
whatever the patient is following, you have to follow the same approach, right? Anyhow. Then we have, you can say, active listening skills by minimizing the interruption, by recapitulating. And specifically in the first encounter, we have to start a conversation with open-ended questions such as, how can I help you? Or I just have gone through your file. I can understand that you're having blah, blah issue. So if you can tell me onwards. Then we have a closed-ended question. Closed-ended question are specific question. There must be range of grammar in there. There must be collection of questions like related to the disease or the problem. You must incorporate some few questions, and it would be it has to be done, to focus on the main aspect of the disease, and you can ask those questions. While asking the closed-ended question, try to ask one question at a time and clarify the weak question. You should not have the if there is a weak question, try to clarify it and try to encourage the patient and try to summarize the things that you have mentioned to the patient. In providing skills, what you have to do is to establish what the patient already know. If there is a disease or diagnosis, you have to explain the patient what you know about that. Then you have to explain in the layman language. And when you are explaining something, either disease, either treatment plan, try to be gentle by maintaining the sequence that has been given to you in the task, and by incorporating the cohesive devices such as firstly, secondly, thirdly, right? And you must have a natural pauses between the information so that the patient can capture it. Organize the information with the help of cohesive devices and encourage the patient to contribute in the conversation, right? Followed by the linguistic skills, we have fluency, we have appropriateness. It's very important how to start the card as per setting. It should be intelligibility. We have a clear pronunciation, right accent, right intonation, and right word stress. And then the variety of grammar. We can expect different type of card. Let's say first encounter versus second encounter. In first encounter, we can have normal situation. The patient is coming to you for some routine thing. It can be started with a normal greeting with appropriate tone, followed by the open-ended question or rapport building skills. If it is necessary, if your card allows you, then we can go for the open-ended question. After open-ended question, listen to the patient complaint, provide empathy, and along with the empathy, you have to go for the active listening skills by recapitulating what the patient had informed you. Then open and close-ended question. Then exploring the patient perspective, what he know or she know, what he expect or she expect. Then explaining the disease, the layman language, and then you can go for the information providing skills. Followed by the fact, it's your, you can say, the next task is your educating the patient. And while educating the patient, you must make sure that there must be proper sign posture changes involved. So then we have a second encounter. In second encounter, we have a good news and bad news. If we have a good news, let's say, then we can start with a high tone. The same line, if I'm not wrong, today you're here to collect your blood test report, right? But if you should be in a high tone. If you have bad news, we should have a depriving tone. It should be depriving toward the end. So then we have the background information. You can ask, I can see from your file that you're having blah, blah, blah. So have you noticed an improvement, or you think that your symptom are worsening? And what do you think, what could be the possible reason of worsening of symptom? And how about your experience of handling the medical reports? Like, what do you know about the handling of medical reports? Then you can ask the patient if you like to call someone, maybe friends or family. Then you can break the teaser. Unfortunately, have some serious news. If it's a cancer or something like that. If it's a diabetes, still you have to make a ground by asking that you're here for second time, by asking patient understanding about the high blood sugar level, by asking what do you patient expect about that, by asking the let's say what do you understand by diabetes mellitus and so on. Anyhow, and similarly, in case of emergency situation, you have to show the anxiousness in the tone accordingly, and you have to pick up the cue if it's given in the state of emergency. So as long as you remain fluent, as long as you remain patient focused, as long as you are empathetic, so don't worry, it will be fine. So speaking is not a challenging for most of the people. If you are, we can say, if you are, you can say, if you are having an issue in fluency, then it will be a challenge. But if you are a fluent person, if you are not having any grammatical mistakes, then it will be fine. So keep a focus on the speaking task what has been given to you. Go there by somewhere around 7:15 to 30. उस टाइम पे आप पहुंच जाए. मेक श्योर कि जिस डॉक्यूमेंट पे आपने अप्लाई किया था, दैट्स आईडी कार्ड और पासपोर्ट जो भी था, वो आपके पास हो और एक्सपायर ना हो. ठीक है, ये भी मेक श्योर कीजिएगा.
एक्सपायरी जो है ना उसका इशू आता है। और सेकेंडली आपके पास जो है ना, वैसे तो स्टेशनरी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अपनी स्टेशनरी लेके जाएं अच्छी अच्छी लेके जाएं। स्टेशनरी तो अच्छा है वैसे, वो देते हैं स्टेशनरी, लेकिन फिर भी अक्सर औकात वहाँ पर स्टेशनरी क्वालिटी का हम कुछ नहीं कह सकते। तो आप स्टेशनरी लेके जाएं। और सेकेंडली ये कि जो आप लेके जाएंगे अपने जो पाउच वगैरह, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, गो थ्रू हो आपके, मतलब मतलब क्लियर वो हो, उस पर प्रिंटिंग ना हुई हो, ठीक है ना। और सेकेंड थर्डली आप किसी से बातचीत ना करें पेपर के बीच में, किसी से इशारों में बात ना करें, क्योंकि हमारे पिछले कुछ एग्जाम में स्टूडेंट्स के पेपर कैंसिल हुए हैं, हमारे स्टूडेंट्स के, जिन्होंने इस्लामाबाद में दिए, लाहौर में दिए, कराची में दिए, यूके में दिए, या किसी और मुल्क में दिए। तो रैंडमली मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोगों के एग्जाम कैंसिल हुए हैं। पहले उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है, पहले तो स्टूडेंट डिनाई में थे, वो मान रहे थे, लेकिन बाद में वो मान गए, क्योंकि उन्होंने फिर कहा हमने आपकी एग्जाम में इरेगुलरिटीज देखी हैं जी। तो इसलिए मैम वो पाउच क्लियर हो इसमें करते हैं अलाउ, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में मेंशन है, और आप अगर ओईटी की इंस्ट्रक्शन देखें ना, उसमें करता है। लेकिन अगर आप पानी भी लेके जा रहे हैं तो क्रिस्टल क्लियर, मतलब बोतल, उस पर कोई मार्क ना लिखा हो, उस पर कोई साइन ना हो, या आप लेके जाते हैं इस तरह। अगर आप अपने स्टेशन लेके जा रहे हैं तो वो भी क्लियर इनवेलप के अंदर हो, गो थ्रू हो, मतलब उसमें कुछ मार्किंग या प्रिंटिंग ना हुई हो, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और पेंसिल जो है वो आप यूज करेंगे 2B ग्रेड की पेंसिल मिल जाएगी आपको, 2HB ग्रेड की। और सेकेंडली ये कि आपने विच वर्ड नॉट टू बी यूज्ड इन ओईटी, ये था। तो सेकेंडली ये कि आपने जो है ना मेक श्योर करना है कि आप जो है अपने साथ मतलब कोई खाने पीने की चीज भी अलाउ नहीं होती वैसे आपको लेके जाने के लिए। जैसे चॉकलेट्स वगैरह लोग लेके जाते हैं तो वो अलाउ नहीं करते, तो लोग छुपा के ले जाते हैं टिश्यूज वगैरह में, वो आपकी चॉइस है, आपके साथ ले जाते हैं, लेकिन वैसे अलाउ नहीं होती। और किसी से बातचीत भी हम लोग नहीं यूज कर, मतलब बातचीत भी ना करें, किसी को बताएं मत। अक्सर लोग स्पीकिंग कार्ड शेयर करते हैं, या पाकिस्तान में तो नहीं, खैर हमारे कुछ स्टूडेंट्स के यूके में एग्जाम कैंसिल हुए स्पीकिंग शेयर करने पे, जो उन्होंने बताया बाय द वे। और किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि विच वर्ड नॉट टू बी यूज इन ओईटी। बड़ा ओपन सा क्वेश्चन है। अगर राइटिंग की मैं बात करूं तो इनफॉर्मल वर्ड यूज नहीं करने हमने राइटिंग में, जैसे गॉट इनफॉर्मल है, ठीक है। ये आपने जो है ना, गॉट नहीं, गॉट, यूटी, ये इनफॉर्मल वर्ड जो भी हैं, ठीक है ना, ये हमने यूज नहीं करने। बट इनफॉर्मल है, बट भी हम प्रेफर करते हैं ना यूज करें बार बार। कोई भी वर्ड जो कि इनफॉर्मल है हम लोग ओईटी में राइटिंग में यूज नहीं करते, स्पीकिंग में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इसी तरह ही है। मेरे पास कुछ शायद वर्ड्स पड़े, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा अभी ग्रुप में क्लास के बाद। तो इनफॉर्मल वर्ड को कोशिश करें अवॉइड ना करें, अवॉइड करें, सॉरी। और इसी तरह एब्रीवेशंस हैं, तो एब्रीवेशंस भी जो है ना, हम लोग बम्बार्डमेंट उसकी मना करते हैं कि आप ओवरली ना यूज करें। यू हैव टू बी जुडिशियस इन योर रिस्पॉन्स कि आपने कितने एब्रीवेशन यूज करने हैं, कितने नहीं यूज करने। प्रोवाइडेड कि अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल को लिख रहे हैं तो फिर हम एब्रीवेशन लिख सकते हैं, लेकिन वो प्रेफर करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम है तो आप उसको एक्सपैंड करना ज्यादा बेहतर है, ठीक है। वार्म अप सेशन में कुछ भी वो पूछ सकते हैं, इंटरव्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे आपका नाम, प्रोफेशन, क्यों, किस लिए ओईटी कर रहे हैं। लेकिन उस पार्ट की ग्रेडिंग नहीं है। और कोई अच्छा बंदा हुआ तो आपसे पूछेगा नाश्ता क्या किया, कहाँ से है वो, कहाँ से नहीं आए, वो चिट चैट करेगा। इसका पर्पज होता है कि आपको रिलैक्स करना, इसका पर्पज होता है कि आपको बेसिकली कंफर्ट जोन में लेके आना, कि आपको टेंशन ना हो एग्जाम देते हुए, ठीक है ना, आप स्पीकिंग सही तरह दो, ओके। और फिर इसकी इंस्ट्रक्शन खास तौर पे आप सुने गौर से, मतलब क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ये जी, आपने जिस डॉक्यूमेंट पे अप्लाई किया है, चाहे वो पासपोर्ट है या आईडी डॉक्यूमेंट है, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे, और कोई चीज लेके नहीं जानी है आपने। जिस डॉक्यूमेंट अप्लाई किया आपने, ठीक है, आप सिर्फ वही लेके जाएंगे। तो इनकी इंस्ट्रक्शन को गौर से सुनिएगा। जब आपको इंस्ट्रक्ट करें कि आपने एग्जाम स्टार्ट करना है, मतलब आपने एग्जाम स्टार्ट करना है, तो आप तब एग्जाम स्टार्ट करें। अक्सर लोग क्या करते हैं, लेसन स्टार्ट होने से पहले इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये भी इरेगुलरिटीज में आ सकता है, और आपका एग्जाम डिले हो सकता है इसकी वजह से, और उसका एग्जाम कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें आप उस फॉलो करें उसकी इंस्ट्रक्शन को, उनकी गाइडलाइन को, जो आपको बताएंगे। आपके वॉलेट्स वगैरह भी एग्जाम सेंटर में अलाउ नहीं होंगे, पर्स और वॉलेट वगैरह। अलबत्ता आपको वो एक लॉकर सा देंगे जहाँ पे आप अपनी चीजें सेव कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आप गाड़ी में अगर जा रहे हैं, कोई आपको ड्रॉप करने जा रहा है, तो वो आपके साथ चीजें, फोन शून, उसके आप हैंड ओवर कर दें। जब आप एग्जाम सेंटर से बाहर आएंगे तो आप उससे ले सकते हैं। स्पीकिंग टाइम का जो गैप होता है, अगर आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे, तो सॉरी, स्पीकिंग जो टाइम है उसके बीच में गैप है, उसमें आप अपना फोन वापस यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप वापस स्पीकिंग के लिए जाएंगे तो आपकी सब चीजें आपके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो किसी किस्म की कोई भी मटेरियल ऐसा जो कि उनको लगे एग्जाम में हेल्प दे सकता है, अगर वो आपके पास पकड़ी गई या पाएगी, तो आपका पेपर कैंसिल होता है स्ट्रेट अवे, और इवन आपको बैन कर सकते हैं ओईटी देने से। इवन कैम्ब्रिज के एग्जाम है तो आप टोटल बैन हो सकते हो। तो इस चीज़ से खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये कैम्ब्रिज के साथ इनकी जॉइंट वेंचर है, तो आप ऐसी कोई भी चीज़ ना करें। इम्पोर्टेंटली जो है, छोटी सी और बातें हैं कि आप लोग सारे डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, मेरा कहना बनता नहीं है, लेकिन फिर भी लाइट चाहिएगा, जितना लाइट रह सकते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट एनर्जेटिक हो लेकिन लाइट हो।
ताकि आप तंग ना हो। और कंसंट्रेशन हाँ इस चीज में लाजमी रखनी है, अगर आपको खुदा ना खास्ता ऐसा लगे कि इंडिपेंडेंटली किसी भी पार्ट में आप लिस्टिंग कर रहे हो, पार्ट ए आपको लगा पार्ट ए बुरा हो गया, तो उसको फॉरगेट अबाउट दैट, फोकस ऑन द रेस्ट पार्ट बी एंड सी। इसी तरह अगर आपको लगा पूरा लिस्टिंग बुरा हुआ है, फॉरगेट अबाउट द लिस्टिंग। लोग पैनिक कर जाते हैं तो वो फिर अगला पार्ट भी सही नहीं कर पाते। क्योंकि मेरा अपने एक्सपीरियंस में रहा है, काफी स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने के बाद कहते हैं सर हमारा लिस्टिंग बहुत बुरा हुआ था और हमने तो छोड़ दिया, दिल ही छोड़ दिया। तो जब रिजल्ट आता है लिस्टिंग में पास हो जाते हैं, रीडिंग में फेल हो जाते हैं। तो बेसिकली इसलिए अगर आपको खुदा ना खास्ता ऐसी कोई फीलिंग आती भी है किसी भी कंपोनेंट में, तो हर कंपोनेंट को इंडिपेंडेंटली करो, अपनी पूरी एफर्ट मारे हर कंपोनेंट में। आपने आखिरी दम तक लड़ना है, यानी कि लिसनिंग में भी, रीडिंग में भी, राइटिंग में भी, स्पीकिंग में भी। वी नेवर नो, क्योंकि देखें इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि ये रिलेटिव ग्रेडिंग है, एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके 30 है तो आप पास होंगे। ये रिलेटिव ग्रेडिंग है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है आप 22 भी पास हो जाएं, हो सकता है आप 31 32 भी पास हो जाएं। तो इसलिए बेसिकली बेहतर ये है कि आपको अपनी एफर्ट पूरी करनी है, ताकि आप लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग को इंडिपेंडेंटली कीजिएगा, ठीक है। जी बिल्कुल, मोबाइल अलाउड नहीं है एग्जाम रूम में, आप नहीं लेके जा सकते, मोबाइल नहीं लेके जा सकते, आप घड़ी नहीं लेके जा सकते, यानी कि रिस्ट वॉच, यस, ना रिस्ट वॉच लेके जा सकते हैं, ना स्मार्ट वॉच लेके जा सकते हैं, किसी किस्म की कोई चीज नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ एक पेंसिल, रबर शार्पनर लेके जा सकते हैं साथ, बस, और आपका आईडी डॉक्यूमेंट होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। बाकी कोई भी मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह है, या आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते, ये बात याद रखिएगा। आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करते उस चीज के अंदर, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंटली जो चीज है वो ये कि कल जब आप एग्जाम के लिए जाएंगे तो मतलब मैं आपसे कहता कि लाइट वेट होके जाएं, जितना आप लाइट रख सकते हैं। हाँ, एक और फैक्टर जो मेरे ध्यान में आ गया कि वहां पर जो है ना आपके डिजिटल क्लॉक नहीं होती, नहीं, सिंपल रिस्ट वॉच, कुछ भी अलाउ नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, किसी किस्म की घड़ी अलाउ नहीं है, ठीक है। हाँ जी, वॉल क्लॉक लगी होती है, सिर्फ वहां पर वॉल क्लॉक होती है। और दूसरी चीज जो एक थोड़ी सी आप उसको मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि वहां पर टाइम ऐसा नहीं कि फिक्स 9 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है। घड़ी में वो 9:10 में स्टार्ट कर देंगे टाइम, या 9:13 में, 10 तो फिर कैच किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली आपने टाइम 13 से आगे 15 मिनट का कैलकुलेशन करना है। टाइम का ये है मैम, वो बताते भी हैं लास्ट 5 मिनट्स में, अक्सर नहीं बताते, लेकिन वो आपने घड़ी लिखी लगी होती है आपके हॉल में या एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, वहां से आपको टाइम को मैच करना है। पाकिस्तान के अंदर जितने सेंटर भी हैं, अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं, उसमें डिजिटल क्लॉक्स नहीं थी, उसमें सिर्फ आपकी वॉल क्लॉक थी। अल्लाह करे आगे की हमारी डिजिटल क्लॉक आ जाए। लेकिन मैं आपको अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं उनका बता रहा हूँ कि वहां पर किसी भी स्टूडेंट की तरफ से हमें कोई फीडबैक ऐसा नहीं आया कि यहाँ पे हो आपका, ठीक है। रीडिंग वालों का 15 मिनट्स ले लेंगे वो पार्ट ए आपसे, फिर उसके बाद आपको पार्ट बी एंड सी देंगे, ठीक है ना। जी, पार्ट ए आपसे ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। 15 मिनट्स के बाद आपसे पार्ट ए ले लेंगे, फिर आपको पार्ट बी एंड सी देंगे। हाँ, एक और चीज जो कि मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा वो ये, कलेक्शन का टाइम काउंट होगा, नहीं नहीं नहीं, काउंट नहीं होता। मतलब हाँ, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब आपके रीडिंग पार्ट ए है, जब स्टार्ट होता है, इसमें यू आर नॉट अलाउड टू लीव द हॉल, ये बात याद रखिएगा। और इवन जो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, यानी कि उस टाइम भी आप सीट से नहीं उठ सकते। यानी कि लिसनिंग का पेपर स्टार्ट हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है, अब आप सीट से नहीं उठ सकते, ना पानी पीने के लिए, ना वॉशरूम जाने के लिए। और इसी तरह ही लिस्टिंग कलेक्शन जब हो रही है, तब भी आप सीट से नहीं उठ सकते। और पार्ट ए में वैसे तो वो फर्स्ट 5 मिनट्स के बाद वो अलाउ कर देते हैं, लेकिन बनता नहीं है आपको जाना, उस टाइम मत जाएंगे, टाइम होता ही थोड़ा है। तो फिर पार्ट बी एंड सी में भी शुरू के 5 मिनट अलाउ नहीं करते, फिर आप जा सकते हैं। और लास्ट 5 मिनट्स भी, वो 5 to 10 मिनट्स वो अलाउ नहीं करते। लेकिन कोशिश करें कि आप लाइट वेट जाएं, थोड़ा सा इतना ऐसा करें कि आपको 2.5 घंटे उठने की जरूरत ना पड़े सीट से। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन टाइम है और कलेक्शन टाइम है, उसमें वो आपको उठना अलाउ नहीं करते। सेम इज द केस के राइटिंग फर्स्ट 5 मिनट्स में वो अलाउ नहीं करेंगे आपको। और राइटिंग के फर्स्ट 5 मिनट्स में यू आर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग एनीवेयर, ठीक है। और फिर आपको 40 मिनट्स में राइटर कंप्लीट करना होगा। कुछ एग्जामिनेशन सेंटर इतने सख्त हैं कि वो आप पेंसिल भी नहीं उठाने देते आपको राइटिंग के फर्स्ट 5 मिनट्स में, ठीक है ना। लेकिन आप कोशिश करें कि आप फर्स्ट 5 मिनट में पेंसिल यूज ना करें। फिर हमारे पास 40 मिनट्स का टाइम है, उसमें आपने अपना लेटर कंप्लीट करना होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं एग्जाम रिलेटेड, जो आपने फॉलो करनी है। रात आज जल्दी सो जाएं, जितना जल्दी सो सकते हैं, फ्रेश माइंड के साथ जाएं, हेल्दी माइंड के साथ जाएं, तो बेहतर होगा। हाँ, अच्छा, जो आपका टेक्स्ट का पार्ट है, टेक्स्ट को जितना मर्जी अंडरलाइन करें, कोई नहीं है अलाउ। टेक्स्ट का पार्ट जो है, जहां तक क्वेश्चन के पार्ट है, क्योंकि पार्ट ए में वही आपका क्वेश्चन पेपर है और वही आपकी क्या है, आंसर शीट है, ठीक है। तो इसलिए इसका ख्याल खास रखा जाए कि आपके जो क्वेश्चन का पार्ट है वो आपका गंदा ना हो। मतलब जहां पे आपने क्वेश्चन, क्योंकि यही मैनुअल क्वेश्चन आपने करने हैं ना जी, नेम ऑफ कैंडिडेट ऑटो प्रिंट होता है, ठीक है, नो नो जी। तो
बाकी जो है ना, कि जो पार्ट ए है, क्योंकि वो मैनुअल चेक है तो गंदा ना हो, उसकी राइटिंग साफ हो, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, पार्ट ए ऑफ रीडिंग में। लिस्टिंग में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक जो है ना वो काउंट कर सकते हैं, यानी कि बेसिकली आपके फोनेटिकली आपने ठीक होना चाहिए, ठीक है ना। और रीडिंग में अलबत्ता स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और पार्ट ए आपका नीट एंड क्लीन जाए, क्योंकि वहां पे अगर उसको समझ नहीं वो काट देगा, क्योंकि मैनुअल चेक है। इसी तरह पार्ट बी एंड सी, आपको जो है ना, जो लोजेंजेस हैं यानी कि जो जो सर्कल्स हैं उसको आपने शेड करना है। इसमें क्रिटिकल रहें कि खास तौर पे कोशिश करें कि इसकी जो आपकी ऑप्शन है उसको मार्क साइडों में लाइनें ना लगाएं, कोशिश करें। अगर लगा भी नहीं है, थोड़ा राइट राइट साइड पे रखें ताकि वो सर्कल वाली साइड में ना हो, ठीक है ना। तो बार के अगर कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको लगता है कि अभी अनएड्रेस है तो आप पूछ सकते हैं। आपकी सारी जो मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं जो बता दें, ये करनी है आपने पेंसिल से, है 2B ग्रेड की पेंसिल से फिट करनी है आपने, 2B ग्रेड की पेंसिल से आपने उसको फिल करना है, ठीक है। आईडी डॉक्यूमेंट्स अपने सारे रेडी रखें, जो आप आईडी पे अप्लाई किए या पासपोर्ट अप्लाई किए उस पर जाएं, मेक श्योर करें वो एक्सपायर ना हो आपका। ये रीडिंग लिस्टिंग दोनों के आंसर आपके उसी से फिल होंगे मैम। आपने पार्ट बी एंड सी दोनों 2B ग्रेड से करने हैं, और इवन लेटर भी हम लोग 2B ग्रेड पेंसिल से ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई ऐसी चीज जो आप लोग पूछना चाहें रिगार्डिंग एग्जाम इंस्ट्रक्शन, या कोई चीज मेरे से मिस हो रही हो तो आप बता दें। सर ये लिसनिंग और रीडिंग में जो हम अंडरलाइन या सर्कल करते हैं कोई हम अपने hint के लिए, तो वो हम कर सकते हैं। लाइक जिस तरह से टेक्स्ट पे लिसनिंग का बिल्कुल, पार्ट सी है, उसमें जो ऑप्शंस है 3 4। बाय द बुक तो सर अलाउ जी नहीं है, क्योंकि वो मना करते जी हैं। सर। आपको बाय द बुक अलाउ नहीं करते, क्योंकि हम लोग क्योंकि हैबिचुअल होते हैं करने की, तो हम लोग रुक नहीं सकते। तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मैं इसमें गलत हो सकता हूँ, तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा लेफ्ट पे मार्जिन छोड़ के, हम्म। ठीक है, आप करें, क्योंकि स्कैनर का कितना डाया वी डोंट नो फॉर श्योर, लेकिन इतना बड़ा भी डाया तो नहीं होगा। अच्छा। तो लेफ्ट पे थोड़ा मार्जिन छोड़ के आप बेशक मुझ मार्क कर लें, लेकिन वो बाय द बुक मना करते हैं। लेकिन जितने स्टूडेंट हैं वो करते आ रहे हैं, वो मार्क करते हैं, तो मतलब किसी का फेल नहीं हुआ आज तक अलहमदुलिल्लाह। तो बाय द बुक जो है ना, बाय द रूल अलाउ नहीं है, वो मना करते हैं कि जी आप नहीं लिख सकते, अच्छा। ठीक है सर। सर रिपीट कीजिएगा, ठीक। कहाँ नहीं लिख सकते? जो रीडिंग ठीक है लिस्टिंग सर। पार्ट बी एंड सी है ना, आपके ऑप्शन जो हैं, वहां पर आप कुछ मार्क नहीं कर सकते बाय द बुक, ठीक है। सिर्फ आपने सर्कल को शेड करना है। आप टिक क्रॉस, अक्सर लोग करते हैं टिक क्रॉस करते हैं, अक्सर लोग करते हैं सर्कल को सर बाहर से वो फिल सर्कल लगाते हैं, उस सर्कल के अंदर आपने शेड करना है उसको, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई सर और। जैसे लिसनिंग पार्ट ए होता है उसमें बाज दफा जो है वो मतलब छोटी होती है जगह, और उसमें फिल करना होता है, तो हम उसको कैसे उसके अंदर कवर अप करेंगे? क्योंकि ये अक्सर हमने वो जो भी मैम प्रिंट अप्रोप्रिएट होती कराए है हैं दोनों की, उसमें। वो अप्रोप्रिएट होती है। ठीक है, ठीक है सर। और सर उसके अक्सर आंसर्स में जैसे एक प्रॉपर लाइन आ जाती है, बेंडिंग अप, क्लाइंबिंग अप, इस तरह। तो अगर सिर्फ क्लाइंबिंग लिख दी है तो मतलब, लेकिन उसको पूरी लाइन लिखनी होती है क्या? आपने वो पूरा फ्रेज कंप्लीट करना होता है लिसनिंग में? बेसिकली डिपेंड करता है ना आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन था जी जी सर। जिसका मतलब जो टेक्स्ट में था कि बिलो बिलो 11, और उसका आंसर मतलब मैंने बिलो 11 लिखा था, पर उसका आंसर हमने अंडर 11 लिखा था ना। कैसे? सर एक टेक्स्ट में कहा था पार्ट ए हाँ रीडिंग का। हाँ। तो उसमें मतलब उनने एंड का आंसर था कि मतलब जो टेक्स्ट में उन्होंने लिखा था, उन्होंने लिखा था कि बिलो 11 चिल्ड्रन जो है ना, और उसका आंसर जब मैंने बाद में चेक किया तो आपकी तरफ से इसका अंडर 11 लिखा था, तो ये गलत फाइन, दोनों फाइन है, बिलो क्योंकि 100। देखिए जो लिस्टिंग और पार्ट है ना, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आंसर। नहीं सर रीडिंग। सॉरी, रीडिंग जो है ना वो तो टेक्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है ना, ठीक है सर। टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है वही लिखते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा होता है जो आपका पार्ट बी एंड सी, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछ लिया। पार्ट बी एंड सी है ना, सॉरी जो पार्ट बी सी कह रहा हूँ, जो उसके फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट है, उसमें ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर होगा। वो थोड़ा बहुत हमें चेंज कर सकते, अगर बनता है तो हम चेंज करेंगे। जो हमारा आंसर उस सेंटेंस के डिमांड के लिहाज से बनता है तो हम वो लिखेंगे। अगर लेट्स से बिलो द 11 वहाँ फिट नहीं आ रहा, वहाँ पे अंडर 11 फिट आ रहा है, तो आप उसको अंडर थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ये मतलब सेम है ना। जी सर। तो सेंटेंस की जो डिमांड है 15 to 20, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है, तो सीक्वेंस में चेंज करते हैं। जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, जी सर। उसमें ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, सर ठीक है बिलो ना। अंडर तो एक ही चीज है। दोनों सेम चीजें हैं। वैसे एक बात करो, लेकिन सेंटेंस के अंदर से लेट्स से वो बिलो फिट नहीं आ रहा, जी सर। अब अंडर फिट आ रहा है, या अंडर लिखा हुआ है तो बिलो फिट आ रहा है, सेंटेंस का जो फ्लो है, तो आपने वो पढ़ के आइडिया लगाना है, मतलब दोनों का सेम होगा। जी सर। लेकिन 15 to 20 ग्रामेटिकली करेक्ट है। जैसे कि अगर फर्ज करें कंप्लेंट है, ठीक है, और कंप्लेन है, अब बात तो दोनों की सेम है ना, एक एक वर्ब एक नाउन है।
अब सेंटेंस के लिहाज से हमने वर्ब डालना है या नाउन डालना है देखना खाली बस, ठीक है ना। लेट्स से ही कंप्लेंड ऑफ पेन, यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब आएगा एन वाला, और ही प्रेजेंटेड विद कंप्लेंट ऑफ पेन, क्योंकि विद प्रपोजिशन है, आगे नाउन आएगा, प्रेजेंटेड वर्ब आ चुका है पहले से आगे से। तो सिर्फ ये देखना है, इस तरह आई एम फीलिंग लिथार्जिक, अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा आई एम फीलिंग लिथार्जी, तो आप समझ रहे हैं, तो वो ग्रामेटिकली ठीक हो बस। तो यार टाइम ऐसा होता है पीछे उसने लिथार्जी लिखा होगा और सेंटेंस के लिहाज से क्या बन रहा होगा, लिथार्जिक बन रहा होगा, तो आपने सेंटेंस के लिहाज से ग्रामेटिकल मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है ना। अच्छा, रिगार्डिंग द राइटिंग इन ब्लैंक्स जो है साफसादिया, वो बेसिकली क्या है कि इतनी स्पेस होती है कि आपका जो आंसर उसके अंदर आ जाए, यानी कि स्पेस उतनी होती है जितना उसका आंसर होगा। जो लिस्टिंग की मैम आपकी जो पार्ट ए है, देखिए उसमें यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आपने एग्जैक्टली सेम वर्ड सुना आप वही लिखें या सेम फ्रेज लिखिएगा, ठीक है। फोनेटिकली ठीक होना चाहिए, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक काउंट नहीं होती अगर वो फोनेटिकली ठीक हो। फ्लेक्सिबिलिटी है आंसर में मोर और लेस, आपका अगर आंसर उस चीज को एड्रेस कर रहा है जो पूछा गया है और वो टेक्स्ट में भी है, ऐसा ना हो आप अपने अंडरस्टैंडिंग से कुछ और लिख दें। जैसे कि अगर पेल्पिटेशन आप लिख दिए और उसने लिखा हार्ट पाउंडिंग उसने बोला है, हालांकि चीज सेम है लेकिन आपका आंसर गलत होगा क्योंकि आपको टेस्ट किया जा रहा है जो उसने बोला है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द ऑडियो में जो चीज है आपने वो लिखनी है, ठीक है ना। मोर और लेस थोड़ा बहुत माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन जो चीज ऑडियो के अंदर है आपने वो लिखनी है। पार्ट बी एंड सी अब आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वही करेंगे, लेकिन कोशिश करें थीम बेस करें, वर्ड बेस इन्फ्लुएंस ना हो। 90% ऑफ टाइम आपका जो आंसर है वो हाईली पैराफ्रेज होता है, जो ऑप्शन में वर्ड लिखे हुए हैं वो लेस लाइकली मतलब आपकी ठीक होते हैं क्योंकि वो बोलता है वही वर्ड जो ऑप्शन में लिखे होते हैं, लेकिन आंसर ज्यादातर पैराफ्रेज होता है, ठीक है। तो आपने ये चीज देखनी है कि लिस्टिंग रीडिंग जो भी खैर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं वही करें, लेकिन इंपॉर्टेंटली देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये आप लोगों के लिए है कि रिलैक्स होकर दें, जितना रिलैक्स होकर एग्जाम देंगे उतना अच्छा है। देख तो चीज है तो काउंसलिंग की, लेकिन फाइनेंशियल बिलोंग्स टू ऑलमाइटी, टाइम बिलोंग्स टू ऑलमाइटी, ठीक है। यू आर हैविंग ओनली वन थिंग, दैट वाज हार्ड वर्क दैट यू ऑलरेडी हैड डन। अब आप लोग सारे डॉक्टर्स हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, नर्सेज हैं, आप लोग वैसे ही बहुत मेहनती लोग होते हैं और आपने काफी जिंदगी की मेहनत की होती है, तो इट्स नॉट अबाउट द क्रेडिबिलिटी जजमेंट, आपकी कोई चीज जज नहीं हो रही, इट्स मैटर ऑफ टाइम। जो भी आपका एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें रिलैक्स होके फुल टाइम अपनी फुल एनर्जीज दें, क्योंकि आपके अंदर इतना पोटेंशियल, आप आराम से एग्जाम पास कर सकते हैं अगर आप अपनी एनर्जी से करें। लेकिन आप अंडर स्ट्रेस आ गए, एंग्जाइटी आ गए, तो जो आपकी एनर्जीज हैं वो आपको मतलब आप वो परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो हमें वो चीज चाहिए जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो कल के एग्जाम में, तो आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस दिखाएं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, बाकी तो इनशाला इट विल बी वन इट्स टाइम। तो मैं होपफुल कि आप लोग सारे इसको क्वालिफाई करेंगे। तो ये ऐसी चीज जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, जो आप लोगों के जेहन में आ रही हो। तो सर राइटिंग में जो एंड पे हम लिखते हैं योर सिंसियरली और फेथफुली, इसके नीचे आपने क्या प्रॉपर अपना नाम लिखना है कि डॉक्टर? डॉक्टर भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं। अच्छा, योर सिंसियरली फेथफुली, चले आपने बात कर ली तो उसमें डिस्कस कर लेते हैं। अगर डॉक्टर का नाम, रेसिपिएंट का नाम नहीं लिखा हुआ जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, फिर हम लिखेंगे योर्स फेथफुली। लेकिन अगर रेसिपिएंट का नाम है तो फिर हम सिंसियरली लिखेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर आपने डियर डॉक्टर मार्क इसका कॉमा डाला है अगर, तो आप नीचे योर सिंसियरली के बाद कॉमा डालेंगे। डियर सर मैडम कॉमा डाला है तो योर फेथफुली के बाद कॉमा आएगा। तो ये एक जनरल रूल है जो आपने बेसिकली समझना है, ठीक है ना। जो आपने समझना है कि मतलब छोटी छोटी चीजें मेरे ज़हन में आ रही हैं, तो आपने बात की तो मुझसे आ गया। तो खैर पहली बात ये देखें, वैसे तो ग्रामर आपकी आपकी लेट्स से बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका पर्पस ऑफ राइटिंग है, इंट्रोडक्शन नहीं है पर्पस ऑफ राइटिंग। ये कॉमन मिथ है, लोग कहते हैं मेरा इंट्रोडक्शन पर्पस है। पर्पस ऑफ लेटर आपका फोकस है, कि आपका अगर लेटर का फोकस ठीक है तो इंशाल्लाह आपका लेटर फेल नहीं होता। बाकी ग्रामर भी आपकी इंप्रूव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये कि आपका लेटर का फोकस बिल्कुल सीधा हो, क्लैरिटी उसमें साफ हो। अगर वो लेटर का फोकस ठीक होगा तो फिर क्या है कि आपका लेटर इंशाल्लाह कभी भी फेल नहीं होगा। हाँ, आपने कोई चीज मिस कर दी इंपॉर्टेंट, आपने कोई फोकस को डेविएट कर दिया, तो फिर आपको चांसेस आर देयर कि आपका लेटर अदर वे अराउंड हो। लेकिन कोशिश करें कल लेटर को कोशिश करें कि लेटर को क्लियर लिखें। देखिए हैंड राइटिंग तो इस टाइम वन डे में तो चेंज हो नहीं सकती अब, तो जो भी आपकी हैंड राइटिंग है तो आपने कोशिश करना है क्लियर लिखें, मतलब जितना क्लियर लिख सकते हैं, क्योंकि 45 मिनट्स का टाइम बहुत ज्यादा टाइम होता है। आप लेटर आराम से लिख सकते हैं, पहले 5-10 मिनट लगा के आप पढ़ें, उसको समझें। तो अभी उसके बाद जाके ना मतलब आप फिर लेटर लिखना स्टार्ट करें। आपकी राइटिंग मतलब अगर अंडरस्टैंडेबल होगी और मतलब उसमें एलिजिबल वो नहीं होगी तो फिर कोई मसला नहीं है, तो बस आराम से लिखें, बैड हैंड ना लिखें, तो बस इंशाल्लाह ठीक होगा। बाकी क्वेश्चन अगर है तो बता दें प्लीज। रिलेटेड टू प्रैक्टिस है,
लेकिन इंपॉर्टेंटली उसको हम थीम बेस करते हैं, यानी कि वर्ड बेस। मैंने इससे पहले बताया ना कि नेवर गेट इन्फ्लुएंस विद द वर्ड। अब आप ये देखेंगे, अभी आप एक टेस्ट अगर करें निकाल कर, पार्ट बी एस यू खाली फोकस में रख के, अपने गलत आंसर को रिव्यू करें, दोबारा आप प्ले करके दोबारा सुने उनको, और कुछ ना करें, सिर्फ ही सुने, तो आप अपनी मिस्टेक देखेंगे कि 90% टाइम आप वो मिस्टेक कर रही हैं या कर रहे होंगे कि जो वर्ड उसने बोला है या जो फ्रेज उसने बोली है इन्फॉर्मेशन में, वो उससे मिलती जुलती फ्रेज लिखी हुई है टेक्स्ट में ना। लेकिन होता क्या है कि जब आप आंसर देते तो आंसर गलत होता है, तो आप उसको गौर से सुनेंगे तो जो सीम्स लाइक राइट होता है अक्सर वो गलत होता है। इससे मतलब मेरा ये है कि अगर वो मैचिंग फ्रेज यूज कर रहा है, देखें अक्सर ऐसा होता है कि पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट जो है ना वो गिवन होती है, यानी कि 99.99% स्टेटमेंट वो बोलता है और एक लफ्ज चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल वहां पर उसने लिखा हुआ है मस्ट, यहाँ पे वो मे बोल देगा, बात चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल वहां पे इज लिखा हुआ है, यहाँ पे कैन बोल देगा, बात चेंज होगी। तो एक तो ये बात है एलिमिनेशन का कि आपने फोकस करना है कि वो एग्जैक्टली मैचिंग है कि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये करता है वो पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, यानी कि पार्शियल बोलता है पार्शियल नहीं बोलता, तो हम पहला फ्रेज पिक करते हैं, हम पिक कर लेते हैं। इसलिए होता है कि वो स्टेटमेंट बिल्कुल बोलता है। उसका तरीका क्या होता है, अगर वो सेम वर्ड यूज कर रहा है तो वो आंखें बंद करके गलत करें, आपके एक दो क्वेश्चन गलत होंगे इस तरह, अगर वो सिमिलर वर्ड यूज कर रहा है। लेकिन ज्यादातर टाइम वो पैराफ्रेज करता है, वो पूरी स्टेटमेंट बोलेगा एज इट इज, लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो आपने ये चीज रखनी है कि यू मस्ट हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड, क्वेश्चन आपके देख में हो, और उसको क्वेश्चन को सुनते हुए, लेट्स से अगर वो क्वेश्चन है व्हाट डज डॉक्टर वार्न अबाउट, अब वार्निंग जेन में हो, लाजमी नहीं कि वार्निंग का वर्ड वो बोलेगा, यू मस्ट हैव वार्निंग इन दैट। आप वो सुने कि आप वो थीम में क्या कह रहा है, किस चीज को वो एम्फसाइज कर रहा है, वार्निंग दे रहा है आपको, वर्ड नहीं यूज करेगा वो। तो बस ये चीज आपने रखनी है, इसको थीम बेस करना है, वर्ड बेस ना करें इसको, ठीक है ना। थीम बेस करेंगे तो अब ऑब्वियसली लाइक लास्ट डे पे ऐसा मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं उसको आप थीम बेस करें। सर बस यही कि जो सी पार्ट होता है ना उसमें मोस्टली एक क्वेश्चन जब कर लेते हैं नेक्स्ट पे फोकस, वो पता ही नहीं चलता कि वो क्वेश्चन निकल के नेक्स्ट पे चला गया होता है। तो हाँ देखें, ये थोड़ा सा। इसमें ना अगर तो मोनोलॉग हो फिर तो फिर पकड़ी पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, अगर मोनोलॉग हो। लेकिन आपने ये करना है कि जो 90 सेकंड का टाइम मिलेगा उसमें एटलीस्ट 4 एरियाज तो आइडेंटिफाई कर लेना कि मेजर कौन से 4 एरिया से बात हो रही है। लेट से कोई भी टॉपिक है, उसमें 4 क्वेश्चन है ना 6 में से, तो उन 4 क्वेश्चंस का कोई ना कोई जो थीम होगी ना, वो थीम आप लिख लें उन क्वेश्चन के आगे, ये 4 एरियाज हैं, ठीक है। तो आप उसको बस फोकस में रखें, फिर उनकी ऑप्शन पढ़ लें, उनको साथ साथ आपने क्या करना है, पेस मेंटेन करनी है। तो अगर तो वो 4 एरियाज आपको याद रहते हैं तो उनको आपने फोकस में रखना है। अगर आपको लगता है कि आप तो फर्स्ट क्वेश्चन निकल के सेकंड में आ गए तो फर्स्ट को छोड़ें, आप आगे जाएं। तो मेंटेन करना पेस बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इसमें कोई और क्वेश्चन जो पूछना चाहें आप?